मैं आ गया, लाइव आ गया मैं। मैंने अभी मेरा ना वो कैमरा ऑफ कर रखा है। एक सेकंड।
Hello everyone. Firstly, I would like to welcome all of you and thank you for taking. Hello everyone. Firstly, I would like to welcome all of you and thank you for taking time out of your precious weekend and logging into our session. I'm Shreya Taravakar, and aspiring sustainability professional at LLP. Today, we at Sustaina Greens have the pleasure of hosting Dr. Dinesh Jinger, who has been working as a research assistant at ICA, which is the Indian Institute of Soil and Water Conservation Research Center in Vasad, Anand, Gujarat. He has great experience in the field of agroforestry. Currently, he is working on dragonfruit, lemongrass, and chico waste used in the degraded lands of Mahir vines. He has several um, roles to his name, including BSc in agriculture, MSc in agronomy, as well as a PhD in agronomy with a focus on nutrient management. So rest be assured, we guarantee some groundbreaking insights and thought-provoking discussions coming your way in the next 45 minutes. So, welcome, sir. And before we jump into a discussion, is there anything you would like to say? Perfect. So for all the viewers who are new to this field, as well as those who are professionals, let's start with the basics. Can you tell us what agroforestry is and what kind of sparked your interest in this field? Great, so now that we have a brief overview of agroforestry, I'm sure the audience is curious to know how it differs from. Hello, can you hear me? Hello. Yes, can you hear me? Yeah, yeah. Okay, perfect. You're audible. Okay. Am I audible to you? Yes, yes, yes.
Hello, everyone. Welcome. Firstly, I would like to thank all of you for taking time out of your weekends and logging into our early session. I'm Shreya Tarwarkar, and I'm an aspiring sustainability professional and a project intern at Sustaina Greens LLP. Today, we at Sustaina Greens have the pleasure of hosting Dr. Dinesh Jinger, who has been working as a research scientist at ICAR, which is the Indian Institute of Soil and Water Conservation Research Center in Anand, Gujarat. He has great experience in the field of agroforestry. Currently, he is working on dragon fruit, lemongrass, and chiku based agroforestry system in the degraded lands of Mahi Ravines. He has several laurels to his name, including a BSc in agriculture, MSc in agronomy, and a PhD in agronomy as well, with a focus on nutrient management. So, rest be assured, we guarantee some groundbreaking insights and thought provoking discussions in the next 45 minutes. So, welcome, sir. And before we jump into our discussion, is there anything you would like to say or give us a sneak peek into what's coming up next? Yeah, thank you, Ms. Shreya. So first of all, I would like to thank Dr. Meenakshi Singh, founder and managing director of Sustaina Greens LLP Vadodara, for providing me an opportunity to share my research experience on agroforestry. And moreover, I would like to thank you also for your constant support and help during the entire journey of this program. And of course, I am here today to talk about the agroforestry systems which are being followed by the farmers on 26 million hectares of the land all over the India, and their impact on environmental sustainability and future prospects. And today we will discuss about agroforestry system in detail. Awesome. So let's get into the discussion. So, for all the viewers that are new to this field, as well as the experienced professionals, I think we should start with the basics. So, can you tell us what agroforestry is exactly, and what kind of sparked your personal interest in this field? Actually, agroforestry is an alternate land use system. So in which we grow perennial species like trees, shrubs, palms, and bamboo. Okay, along with the annual crops or herbaceous crop or animal on the same piece of the land in an spatial arrangement or some temporal sequence. So this is just one kind of definition, but I will tell you the four things so that it will become easy to understand what exactly agroforestry is. Normally, agroforestry has two or more number of the plant species. Okay, in that one species should be woody perennial. The second thing is that there are always two or more outputs in agroforestry system, in any agroforestry system. And the third thing is that the cycle of the agroforestry system is always more than 1 year. And the last thing is that there should be ecological and economical interaction among the components. So these are the four important things in agroforestry. And there are three attributes of the agroforestry system. That agroforestry system should aim to enhance the productivity. Second thing, it should sustainable in nature, and third one, it should be adaptable by the farmer. So sustainability, productivity, and adaptability. These are the three main pillars of the any agroforestry system. And there are so many agroforestry system has been developed by the scientists, researchers, and farmers are following them. I will tell you few of them, like agri silviculture. So in agri silviculture, what we do, we grow crops along with the tree component. Like if we take example of Nilgiri, that is called eucalyptus. So if we grow eucalyptus along with the wheat crop, that it will become agri silviculture system. Another one is that if we grow horticulture fruit crop along with the annual crop, like we are growing mango along with the cowpea, so it will become horti silviculture system. And there are so many another system are also there, like we are growing fruit trees along fodder trees. Okay, then it will become hortipasture system. If we are growing trees along with the grasses, then it will become silvipasture system. So there are so many systems, like one sericulture is also there. We grow mulberry along with the silkworm.
Then apiculture is also there. We are growing fruit crops along with the honeybees. So these are the so many systems. So this is all about the introduction of the agroforestry system. Great. And you asked that why I created my interest in this field. So there are two reasons actually behind this. And first thing is that I belong to farming community. Okay, so I have been in the field since my childhood, and I used to play with the soil. I used to see my grandparents how they grow the trees, how they raise the plants. So since childhood is my passion towards the agroforestry. And another thing is that when I was pursuing my PhD, so I was attending one seminar, and one person quoted one quotation. It was like that that engineers make the world, and doctors save the world, and agroforestry person or agriculturist feed the world. So that thing stuck in my mind, and I thought that feeding is more important than building the world or saving the world. So that day I decided that if I become scientist, then definitely I will work on the agroforestry system. Uh, the voice is not audible to me. Voice is not audible. Um, I think I had a little bit of network issue, but sorry about that. That Yeah, was now some it's audible. interesting information that you shared. And now that we kind of have a brief overview of agroforestry, I'm sure the audience is kind of curious to know how it differs from the traditional farming practices, which kind of most of us are aware of. Yeah, of course, there are so many differences between traditional farming system and agroforestry system. So I will tell you some of them. You see, monocropping is very much popular in traditional farming. Farmers grow one crop at a time. But in case of the agroforestry system, farmers go for the multiple cropping, the diversified cropping system. So they grow two or three crops at a time. The second thing is that in traditional farming, crop failure is more common. Because you are growing a single crop, if any abiotic and biotic space is there, then your total crop failure will be there. But in case of the agroforestry system, you are taking two or three crops. Okay, so if your one crop is damaged, then you have two remaining components. You can take some, revenue or production from that. So total crop failure is very less in case of agroforestry. And third thing is that in traditional farming, farmer, they go for excessive irrigation, they go for excessive fertilizer just to increase the production. But in sustainable, in agroforestry, it is not like that. Sustainability is a major concern in case of agroforestry, besides productivity. So these are some of the differences in traditional farming and agroforestry. Got it. And I see some questions popping up, but I just wanted to take a minute here. And for all of you who are sending the questions in the chat box, we will try our best to kind of take those up in the last 5 to 10 minutes. Um, so moving on, given today's environmental conditions and human encroachment, as well as the never-ending demand that we're seeing, can you talk in brief about how agroforestry can help towards a sustainable food system? Yeah. You see, agroforestry plays an instrumental role in enhancing the soil fertility and reducing the soil erosion. And one thing I want to tell you that the tree is a major component in any agroforestry system. Okay, and each and every part of the tree plays an important role in this aspect. I will tell you one by one. You see, the leaves of the tree. Okay, the leaves of the tree after they fall down on the ground, they become leaf litter. Okay,
After their decomposition, they add nutrient to the soil, like nitrogen, phosphorus, calcium, magnesium. So many nutrients they add to the soil. Second thing, there are so many species of the trees that add nitrogen, particularly by fixing atmospheric nitrogen. Like shisham is there, Dalbergia shishu, casuarina is there, then subabul is there, then acacia is there. So they fix nitrogen in the root nodule and to the soil. So they are fixing the nitrogen. Third thing is that the root of the tree, they go deeper into the soil. Okay, they extract the nutrients from the deeper layer and make them available in the surface soil. So roots of the tree, they act as a nutrient pump. Okay, so and after that, there are so many fine roots are also there. Okay, what they do, fine roots continuously grow and they die, continuously grow and they die. Then what happens? The dead roots, dead fine roots, they add organic matter to the soil. So addition of organic matter, addition of nutrients, nitrogen fixation. So by this way, they enrich the soil fertility. If we talk about the this soil erosion, then the fine roots, again fine roots play major role in this aspect. Fine roots, what they do, they hold the soil particle or they bind the soil particle. Okay, they do not allow the soil particle to move or to detach whenever any heavy rainfall is there or any heavy runoff is there. So fine roots play important role. Second thing, you have seen that the canopy of the tree, or that is called crown. Whenever heavy rainfall, you have seen the landslide areas. Okay, the hilly areas, the trees are there. Whenever heavy chunk of the that soil, or so many things falling down, then the tree stem of the tree, stem of the tree act as a barrier for the debris movement. So by this way, stem, leaves, roots, and every part of the tree, the reduction of the soil erosion. Great. That is some great information. I think it's very important to keep it in mind given that we're seeing so many kind of floods and after effects of like heavy rains. So that's very helpful to know. And then based on what you just explained, we now have a better understanding on how it has a positive impact on sustainable food systems. But can you also talk about how it contributes to environmental sustainability, as well as the livelihood of kind of the local communities and the farmers who are involved in this industry? Yeah, of course, agroforestry systems now, they improve the environmental sustainability as well as the livelihood of the farmer. As I already told you that the tree is a major component of, any agroforestry system. And we got, we received the tree, we receive the timber or wood from the trees. Okay. Nowadays, that timber is used in so many sectors. Like it is used in, making buildings, in furniture, airports, making, matchsticks, making papers, making cricket bats. So there are so many, utilization of the these timber. But have you ever thought where all these raw material comes from? It is coming from the natural forest. Okay, so for making all this, we have to do deforestation, or we have to go for cutting of the trees. So by doing this, there is so much pressure on the natural forest. Okay, but if we develop any agroforestry system, if we develop any agroforestry model, so those requirement we can fulfill by the agroforestry system. So we can maintain our natural forest as such, and we can maintain the diversity. So by agroforestry system, we can reduce the pressure on the natural forest. Second thing, you have visited cities and you have visited, villages. So in cities, always pollution is more. Air pollution is there, water pollution is there, noise pollution is there. But in villages, it is not like that because greenery is more.
So, like this way, if you are developing any agroforestry system, you can reduce the noise pollution, you can reduce the air pollution because they have, trees have the capacity to absorb the particulate matter, they have capacity to absorb the, greenhouse gas like CO2. Okay, they have capacity to, absorb the noise also, and they have capacity to, purify the water. So by this way, agroforestry system also helping in the reducing the environmental pollution. And third thing is that this is very important. We have seen wherever forest is there, okay, diversity will be more and wildlife habitat will be more. Okay, so actually, this agroforestry means we are developing a mini forest or micro forest. Okay, so if we are developing this, then diversity will be more, and habitat for the wild animals will be more. So we are conserving the wild animals and diversity also. If we talk about the livelihood, you see, in agroforestry system we take a number of crops, like we are taking the cereals, we are taking the pulses, we are taking the fruit crop, we are taking the flowers, then by this way there is throughout the income, income is throughout the year. This is the one aspect. So by this we can increase the livelihood. But I'll tell you one example. If one person is growing any tree species, okay, tree species in agroforestry system is just like a FD or fixed deposit. Okay, you plant the tree, okay, you forget it up to 6 years, you cut it up to 6 years, you will get 15 to 20 lakh rupees. So you can imagine 15 to 20 lakh rupees after 6 years, and continuously he is earning the money from the normal crop. So by this way, livelihood is also increasing. So a person, if going into this passion, in this profession, can earn a lot of money. So like this way, livelihood is also increasing, and people also getting so much, lucrative offer. I think that must be kind of very encouraging for people who are interested in this field. But now I would kind of like to shift the focus from the sustainability aspect of it and throw some light on the comprehensive agroforestry plan, which was launched by the president of India in February 2014. So it was called the National Agroforestry Policy, and the objectives were to encourage and expand tree plantation in complementarity and integrated manner with crops, livestock to improve productivity, employment, income, livelihoods of the rural households as well as the small holding farmers. Is similar to this, are you would you kind of like to highlight any notable projects in India that you think have made a positive impact on the environment as well as the local communities? Actually, in India, organized research on agroforestry was initiated in 1983 by the establishment of the All India Coordinator Research Project on Agroforestry at 20 centers. And later there was the establishment of, National Research Center on Agroforestry at Jhansi in 1988. So currently, there are 39 centers are there. They are working on the agroforestry throughout the country, and they have developed, so many agroforestry systems for the each and every part of the country. And even more, some business corporates like ITC, Wimco, Hindustan Paper Mills, West Coast Paper Mills, they are also working to develop the high yielding, improved varieties of the tree species to meet out the, requirement of the raw material. So there are so many agroforestry systems, like timber-based systems are there, horticulture-based systems are there, fuel or fodder-based systems are there for each and every part of the country. So I will tell you some of them. If we talk about the North India, in North India, poplar plus wheat system is very popular. Poplar is a tree which is used for the plywood, and matchsticks are being made from that tree. So poplar plus wheat is an agri-silviculture system. It is very much popular in the North India. Second thing, if we talk about the South India, in South India, subabul, Lucania leucocephala. This tree is used for the pulp and the bioenergy. Okay, so farmers of South India, they grow, subabul along with the castor and arhar on agave. Okay, so this system very much popular in the South India. If we talk about the all over India, one agroforestry system is very much popular, that is based on the eucalyptus. That is called Nilgiri or Sapeda. Okay, so this system is popular throughout the India.
it is this species very fast growing. So people are earning a lot of money from that. If we talk about the coastal area, then casuarina based agroforestry system is very much popular. Okay, if we talk about the northeastern part of the country, then one tree is there, alnus, or it is also called alder. So people of northeastern part of the country, they are growing cardamom with this tree species. So these are the some of the tree timber based example of the agroforestry system. And I'll tell you some of agro horticulture based agroforestry system. If we talk about the arid part of the country, like there this amla and bear based agroforestry system is very much popular. If we talk about the Maharashtra and Gujarat, then dragon fruit based agroforestry system is very much popular. Okay, if we talk about the eastern part, like Bihar, their lychee based system is very much popular. And if we talk about UP, Delhi, and NCR part, then where their mango based agroforestry system is very much popular. Okay, if we talk about the fodder base, so one tree is there, Grigia optima, that is called Bhimal. So farmers of hilly region, they are growing Grigia optima along with the maize and sorghum. This is a very much good quality fodder they get from this tree. So this is very much popular in hilly region. And if we talk about the mulberry, it is very much famous in the Jammu Kashmir. People are growing mulberry there. Then, if we talk about the arid part of the country, there Prosopis senior area one tree is there. Okay, it is called HD in Hindi. So उसका जो leaves है वो भी काफी palatable है, और animals काफी अच्छे आराम से खाते हैं उसको। तो ये कुछ एग्जांपल है फूड के। तो इतने सारे सिस्टम डेवलप किए हैं हमारे साइंटिस्ट ने, हम लोगों ने। तो फार्मर्स की जो रिक्वायरमेंट है, फार्मर की जो लाइवलीहुड है, काफ़ी इम्प्रूव हुई है और काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आया है। पहले लोग एग्रोफोरेस्ट्री को जानते नहीं थे, और अभी ग्रेजुअली पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स द एग्रोफोरेस्ट्री। That is very interesting to know that we have so many different systems that are available in India and people are practicing those. But I know we kind of briefly touched upon how agroforestry conserves soil nutrients and prevents erosion. But just taking it a step forward, I would also like to talk about how it helps water management, improving water management as well as mitigating any climate change effects in India. ओके, सी देखो, इंडिया इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। ओके, सो टेम्परेचर इज ऑलवेज रिमेन्स हाई. So whenever a farmer go for the irrigation in the open field, then definitely evaporation losses will be there. But in case of agroforestry, it is advantage for us that in agroforestry shade is very high. Shade is very much shade is there. So whenever we apply irrigation, so there will not be any kind of the evaporation losses. So we can manage our water very easily. Second thing, the leaves or the leaf litter, when they fall down on the ground, they plant or tree can survive because they extract the water from the deeper layer. Second thing, while penetrating, roots now while penetrating into the soil, they make micro and macropores. So infiltration is more. So by this way, checking the evaporation losses and extracting the moisture from the deeper layer and more infiltration. So water management is more easier in agroforestry rather than the other cropping system. And if we talk about the climate change, we know that CO2 is a major culprit in the climate change. Okay, and CO2 is a greenhouse gas. And we have advantage that our tree is having the great capacity to absorb the atmosphere CO2 and store into its biomass as a carbon. Okay, there are so many agroforestry system. They have diverse range of fixing the carbon. But on an average, a agroforestry system can fix 10 to 15 ton per hectare per year carbon as a carbon CO2 equivalent. And recently we have committed, in Paris Agreement, we have committed one thing that we will create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of the CO2
through additional forest. So we can do this thing, by developing agroforestry system. Okay. Another agroforestry system, improve the microclimate. If microclimate is improved, then we can, protect the plant from the cold wave, from the heat wave. Similarly, if any silvipasture system is there where we keep the animals in the, our area in the farm, so animals are can be kept in the shed. They can be, protected from the sun scorching or, heat stress. So these are some of the example by which, impact of the climate change can be reduced by the agroforestry system. Got it. Thanks so much for all the detailed information. I just wanted to take a quick pause here and thank all the viewers for staying on, as well as welcome all the new viewers who just joined in. But we're almost at the end of our discussion, and I think we're good to have like 5 minutes to take on any additional questions. But now that we have a brief overview of what agroforestry is and how it contributes to a sustainable future, I wanted to get your opinion on the new technologies and innovations that are upcoming in this field, or any of the innovations that you worked with. Yeah, of course, innovation is required in this field, and we know that whenever we want to improve the productivity of any crop, then we go for, development of the high yielding variety through breeding efforts. And till now, in the field of agroforestry, in the field of the tree farming, high yielding varieties or improved, quality planting material is not there. So there is need to develop the quality planting material through the, cloning technique, through the tissue culture, or through, mass multiplication of the germplasm. So number one thing is that we should develop good quality planting material for the agroforestry. Second thing, this is the era of the technology. Nowadays people are using drones, people are using remote sensing. Okay, so those techniques we can use, and we can see the impact of the agroforestry in the non-accessible area, because we have developed any agroforestry system in the, slopes or hilly areas. You cannot go there. You cannot, evaluate the this impact. So from these techniques we can, quantify the impact of the agroforestry system. Third thing is that, biofertilizer are being used in the agriculture, but they are not being used in the agroforestry. No one has used till now. So we can see the how biofertilizer is behaving in the agroforestry system, so that we can evaluate area is there. यहाँ पे वो जो so mindful area is there, and hilly area is there, landslide areas are there. Okay, वहां पे हम एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम डेवलप करते हैं. ओके, तो वहां पे क्या सर्वाइवल नहीं हो पाता प्लांट का, तो सर्वाइवल इज वेरी लेस. तो हम क्या कर सकते हैं, आजकल मार्केट में बहुत सारे पॉलीमर्स आ रहे हैं, लाइक हाइड्रोजेल इज देयर, जल शक्ति इज देयर, और उनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो अपने वेट से 400 टाइम्स ज्यादा है. तो वहां पे हाइड्रोजेल अलोंग विद एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम हम एक नया कॉन्सेप्ट ला सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका सर्वाइवल नहीं होगा, आपका एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम डेवलप नहीं होगा. तो ये पॉलीमर्स को हम एग्रोफोरेस्ट्री में यूज करके वो डिग्रेडेड लैंड्स को भी हम रिस्टोर कर सकते हैं, रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, रिक्लेम कर सकते हैं. ओके, और हमने अभी इंडिया ने एक कमिटमेंट किया है कि बाई 2030 वी हैव टू रिस्टोर दी 26 मिलियन हेक्टर ऑफ द डिग्रेडेड लैंड. तो वो हम अचीव कर सकते हैं इसके थ्रू. And another thing, there are so many, fast growing species are there, like Melia dubia is there. It is, वो यूकेलिप्टस और नीलगिरी से भी फास्ट ग्रो करता है. ठीक है, तो हम ऐसी स्पीसीज को आइडेंटिफाई करें, उनका डोमेस्टिफिकेशन करें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो. तो इस एरिया में भी एक हम नया काम कर सकते हैं. द लास्ट थिंग दैट वी ऑल नो दैट बैम्बू इज अ वेरी वर्सेटाइल स्पीसीज. पर प्रॉब्लम तो बैम्बू पे बहुत कम काम हुआ है. फार्मर्स को ये लगता है कि हाँ, अगर हम खेत में बैम्बू लगाएंगे तो हमारा है ना दूसरी फसल अच्छे से ग्रो नहीं करेगी. पर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मिथ है. आपने भी रिसेंटली देखा होगा कि बैंगलोर का एयरपोर्ट है कैंपेगोड़ा, वो बैम्बू से बनाया गया. गुवाहाटी का एयरपोर्ट भी बैम्बू से बन रहा है. ठीक है, और एक इंटरनेशनल मैड्रिड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो पूरा बैम्बू से बना हुआ है. तो बैम्बू में इतनी वर्सेटालिटी है, तो हम वाई आई डोंट नो व्हाई वी आर नॉट वर्किंग ऑन द बैम्बू. तो और बैम्बू का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि ये बायो फेंसिंग में भी काम आता है.
ठीक है, तो वो भी है। तो मेरा सबसे यही कहना है कि जितना हो सके बैम्बू पे काम करो, बैम्बू आपको बहुत पैसे कमा के देगा। So these are the some of the innovation we can do in this sector. Awesome. That is really interesting and exciting to know. Everyone kind of gain new information, and I hope we keep moving forward in our research and kind of coming up with system or a new product. People are curious to know what its impact is or kind of. So just going off this, what are some of the metrics or in as well? Actually, nowadays, we are using, ecosystem services concept to see the impact of the agroforestry system. So we are having four ecosystem Sir, I think services. your voice is cracking a little bit. Am I audible? Shreya, am I audible? Yes, yes, you're So I was telling you that nowadays we are using ecosystem services concept to evaluate the impact of the agroforestry system. So we are having four ecosystem services. Number one is provisioning services, then regulating services, then supporting services, and then cultural services. So in provisioning services, what we do, we see the production aspect of the food, fodder, fuel, fish, जितना भी हमारा प्रोडक्ट है एग्रोफोरेस्ट्री का, उसका जो प्रोडक्शन एस्पेक्ट है वो हम प्रोविजनिंग सर्विसेज में देखते हैं। सेकंड थिंग, रेगुलेटिंग सर्विसेज में हम क्या देखते हैं कि हमारा जो इरोजन है, इरोजन कितना कम हुआ है या बढ़ा है। देन दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि जो कार्बन है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, वो कितना हुआ है, कितना कम हुआ है या बढ़ा है एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम से, और वाटर प्योरीफाई कितना हुआ है। तो ये जो रेगुलेटिंग सिस्टम से हमें सर्विसेज से ये पता चल जाता है कि कार्बन स्टोरेज कितना हुआ है, ठीक है, सोइल इरोजन कितना कम हुआ है, और हमारा वाटर कितना प्योरीफाई हुआ है। और अगर बात करें हम सपोर्टिंग सर्विसेज की, सपोर्टिंग सर्विसेज में हम क्या मेजर करते हैं कि हमारा जो न्यूट्रिएंट है और वाटर है वो कितना रिसाइकल हुआ है, बिकॉज हम एडिशनल भी न्यूट्रिएंट दे रहे हैं और एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम से कितना आ रहा है, ठीक है। तो वो वाटर और न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग का हम पता कर लेते हैं। देन सोइल फॉर्मेशन है, उसका भी हमें आइडिया होता है कि कितना सोइल इरोजन हुआ है, कितना फॉर्मेशन हुआ है। तो ये हम सपोर्टिंग सर्विसेज से पता करते हैं। लास्ट है कल्चरल सर्विसेज। कल्चरल सर्विसेज में क्या है कि आपका इको टूरिज्म आ जाता है, रिक्रिएशन आ जाता है, एस्थेटिक वैल्यूज हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी है। तो हमें ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम से आपका इको टूरिज्म में कितना इंक्रीज हुआ है, रिक्रिएशन में कितना इंक्रीज हुआ है, आपकी एस्थेटिक वैल्यू कहाँ तक बढ़ गई है। तो ये सब चीजें हम मेजर कर सकते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज के थ्रू। और बात ये है कि हमारी रीच को कैसे बढ़ाएं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने भी काफ़ी प्रयत्न किए हैं। लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग मनी इंसेंटिव्स फॉर दी प्लांटेशन पर्पज। अगर कोई किसान एक पेड़ लगा रहा है तो उसको गवर्नमेंट 120 रुपये देगी 3 साल के लिए, अगर वो 50% प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखता है। अगर वो बैम्बू लगा रहे हैं तो गवर्नमेंट उसको 240 रुपीज़ देगी अप टू 3 ईयर्स, अगर वो 50% प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करता है। तो एक ये अच्छा कदम है कि हम एग्रोफोरेस्ट्री के थ्रू किसानों को जागरूक कर सकते हैं। सेकंड थिंग, कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हैं, लाइक हर मेड पे पेड़ है ना, एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट कर सकते हैं, कोकोनट डे सेलिब्रेट, जब भी रिसेंटली 2 सितंबर को कोकोनट डे था तो हमने काफ़ी प्लांटेशन किया। अभी 18 सितंबर को बैम्बू डे आ रहा है, तो वी आर आल्सो प्लानिंग टू 5000 प्लांट्स ऑफ द बैम्बू। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम करके हम फार्मर्स को अवेयर कर सकते हैं टुवर्ड द प्लांटेशन।
और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल बनाना चाहता हूँ। सेक्रेड ग्रूव्स एक है, उसको सेक्रेड फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं लोग, कुछ कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं कि मंदिर और नदी के किनारे एक छोटा मिनी टाइप का एक फॉरेस्ट और प्लांटेशन डेवलप कर लें, ठीक है। और उसको वो क्या करते हैं, काटने नहीं देंगे कभी किसी को, वो मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर हम इनको काटेंगे, ओके, इनको डैमेज करेंगे तो बड़ी कैलेमिटी आ जाएगी, लाइक जैसे कोरोना था, ठीक है। तो ऐसे भी लोग अपने आप को और अवेयरनेस फैला रहे हैं कि ट्री का कितना इम्पोर्टेंस है। ओके, so these are the some of the things by which we can reach to our farmers or towards the agroforestry. Great. Thank you so much for going into so much detail and being so thorough with all of your answers. Dinesh sir, I think it's almost time, and as promised, I would like to open the floor to some questions. But before we do that, is there anything else you would like to share with the audience, particularly those who are kind of new and interested in this field but are eager to learn and contribute? Yeah, actually, I want to share my some of the research experience. I have developed the agroforestry system. Okay, the first one is that silvo aromatic system. उसमें मैंने क्या किया है, मीलिया डूबिया एक प्लांट है फास्ट ग्रोइंग, उसको मालाबार नीम भी बोलते हैं, मलेशियन नीम भी बोलते हैं, उसके साथ में मैंने लेमन ग्रास को ग्रो किया है। तो दिस इज कॉल्ड सिल्वो एरोमेटिक सिस्टम। इसमें क्या है, और ये जो सिस्टम मैंने डेवलप किया है ये डिग्रेडेड लैंड में किया है। ओके, माही माही जो रिवर है गुजरात के, इसके पास में रेमाइंस लैंड में किया है। तो इसमें क्या है, मीलिया डूबिया आफ्टर 5 to 6 ईयर अगर उसको आप कट करते हो तो एक फार्मर 15 से 20 लाख रुपए कमा सकता है फ्रॉम मीलिया डूबिया सिंगल उससे। फिर वो आपका जो लेमन ग्रास है वो आपको साल में 3 बार कटिंग देगी। तो आप एक साल में 200 से 300 लीटर लेमन ग्रास ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उससे, मतलब प्रोड्यूस कर सकते हो। और मार्केट के अंदर लेमन ग्रास ऑयल की कीमत है 2000 से लेके 2500 रुपये पर लीटर। तो यू कैन इमेजिन कि डिग्रेडेड लैंड में एक सिंपल सा एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम लगा के आप 30 to 40 लाख रुपीज कमा सकते हो। दूसरा है, आजकल एक फ्रूट बहुत चल रहा है मार्केट के अंदर, ड्रैगन फ्रूट। ओके, तो ये ड्रैगन फ्रूट के साथ मैंने मिलिया एक प्लांटेशन किया है, तो वो एक हमारा हॉर्टी सिल्वीकल्चर सिस्टम डेवलप किया हुआ है। तो उसमें भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मिलता है। मिलिया डूबिया उसमें भी है, 15 से 20 लाख रुपये वो डायरेक्ट आ जाएंगे। आपका ड्रैगन फ्रूट क्या है, आपको सेकेंड ईयर से आपको प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देगा। तो सेकेंड ईयर से आपको 7 से 10 लाख रुपए ड्रैगन फ्रूट से मिलेंगे, ओके, कंटिन्यूसली। और ड्रैगन फ्रूट की लाइफ काफ़ी अच्छी है, 10 से 12 साल चलेगा, 15 साल चलेगा। और मिलियाडू आप 6 से 10 साल के अंदर कट करके दोबारा मिलियाडू लगा सकते हैं। तीसरा है, मैंने एक सिस्टम डेवलप किया है एग्री होर्टी का। तो उसमें मैंने काउपी के साथ में सपोटा लगाया है। और सपोटा में क्या है कि आपको मैंने ग्राफ्टेड लगाया है, तो ग्राफ्टेड में आपको 3 साल के बाद आपका फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो वो भी एक अच्छा सिस्टम है। और ये तीनों सिस्टम डिग्रेडेड लैंड्स के अंदर हैं जहाँ पे कोई भी नॉर्मल क्रॉप होती नहीं है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि एग्रोफोरेस्ट्री की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रोफोरेस्ट्री की तरफ जाइए, क्योंकि खाली क्रॉपिंग से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। एग्रोफोरेस्ट्री में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप फ्लावर्स भी ग्रो कर सकते हैं, आप फिशिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आपको पैसा कमाना है, एनवायरनमेंट को सही रखना है और आपकी लाइवलीहुड को बढ़ाना है, तो यू हैव टू गो टुवर्ड्स एग्रोफोरेस्ट्री। So this is all about from my side. Thank you so much again for that added information. And I think we are almost at time, so I would like to start with our questions. So I think some of the questions that we've received in the chat are how does agroforestry system enhance biodiversity conservation? And could you kind of talk a little bit about this in terms of biodiversity? Okay, you see, whenever you develop any agroforestry system, definitely there will be diversity. Diversity will be there. You see, आपने जंगल में देखा होगा, फॉरेस्ट में, मैंने आपको पहले भी कहा है कि एग्रोफोरेस्ट्री इज जस्ट ए मिनी फॉरेस्ट। ओके, तो जब आप एक ट्री लगाते हो, एक फ्रूट क्रॉप लगाते हो और एक दूसरी क्रॉप लगाते हो, तो आपने डाइवर्सिटी मेंटेन कर दी है। तो जब डाइवर्सिटी मेंटेन करोगे तो डिफरेंट टाइप्स के वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे,
वहाँ पे अर्थवर्म भी होगा, वहाँ पे एंट्स भी होगी, वहाँ पे बटरफ्लाइज भी होगी। ओके। और वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स भी होंगे। तो आप डाइवर्सिफाइड एक सिस्टम डेवलप कर रहे हो। जब आप एक डाइवर्सिफाइड सिस्टम डेवलप करते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे डाइवर्सिटी आएगी। तो दिस एक सिंपल सा फंडा है ये डाइवर्सिटी मेंटेन करने का। और जब आप एक डेंस एरिया डेवलप करते हैं ना, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली हैबिटेट बन जाती है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ की हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो, चाहे वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म की हो। तो ये सब चीजें एक डेंस आप जब एक प्लांटेशन करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे डाइवर्सिटी मेंटेन होती है। Great. I think we have another couple of questions coming up. So I know we The spoke voice a is little. not coming properly. Can you hear me now? Low. Um, okay, am I audible now? Yeah, Okay, yeah, good. yeah. So I think the next question is, I know we spoke about how agroforestry helps, with a sustainable food system, with the livelihoods. But can you talk about how, it also helps with increasing the food production to satisfy the demand, since, there's so many crops involved, so many methodologies involved. So does it really help with the food production as well? Can you repeat the question? Yeah, so we have another question from Suchitra here, and she's asking if agroforestry will help increase the agricultural yield and ultimately help us satisfy the demand that we have for food production. Okay. You see, the India's population is increasing day by day. Okay, and we are having 4 million hectares of land. Okay, जहाँ पे भी करते हैं, ठीक है। तो हम क्या है कि एरिया को बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। एरिया जितना है उतना ही रहेगा और पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही है। तो एग्रीकल्चर से जितना हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, मगर हमारे पास 120 मिलियन हेक्टेयर ऑफ दी लैंड है, वो डिग्रेडेड है। वहाँ पे नॉर्मल एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम डेवलप करके फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। Agroforestry is the only solution to increase the food production, बिकॉज आपके पास जो जितना लैंड है उसमें आप कितना कर लोगे। आप ज्यादा Hmm. फर्टिलाइजर डालोगे, ज्यादा इरिगेशन दोगे तो आपकी जो सोइल की फर्टिलिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बट एग्रोफोरेस्ट्री में क्या है, आप डिग्रेडेड लैंड के अंदर भी बहुत कुछ अर्न कर सकते हो, बहुत कुछ प्रोड्यूस कर सकते हो। तो वो जो डिग्रेडेड लैंड को हम रिक्लेम कर सकते हैं, वो एग्रोफोरेस्ट्री के थ्रू कर सकते हैं। जब करेंगे तो हमें प्रोडक्शन भी मिलेगा और रेवेन्यू भी मिलेगा। तो हमारी जो बर्जनिंग पॉपुलेशन है उसको फीड करने के लिए Hmm. एग्रोफोरेस्ट्री बहुत जरूरी है। और बहुत सारे अदर जो रिक्वायरमेंट्स है, वुड की रिक्वायरमेंट है, फ्यूल वुड की रिक्वायरमेंट है, हनी 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 की रिक्वायरमेंट है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम ओनली थ्रू एग्रोफोरेस्ट्री से कर सकते हैं। और सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन में एग्रोफोरेस्ट्री का बहुत मिशन है। Got it. I hope this was helpful, Suchitra. And we have another question from Anupama Devi. So she wants to know, how do forests planted in agroforestry compare to the complex strata that is found in the naturally occurring forests? Can you repeat again? Hello. Shreya, can you repeat the question again? Yes, so Anupama Devi here is asking, how do forests planted in agroforestry compared to the complex strata that is found in the naturally occurring forest? Okay, yeah, yeah. You see, there is difference. In forest, we do not plant the tree. That that is natural vegetation. But in definition, I told you that here we are deliberately, हम जानबूझ के प्लांट कर रहे हैं ट्री को।
ओके, एक आर्टिफिशियल काइंड ऑफ जंगल है, आर्टिफिशियल काइंड ऑफ एक फॉरेस्ट है। ओके, और इसमें क्या है कि मैंने आपको एक बात बता था, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। जब हम डेलिबरेटली ट्री के साथ में क्रॉप को ग्रो करते हैं तो वहाँ पे इंटरेक्शन होगा। वो कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है, वो सप्लीमेंट्री भी हो सकता है, वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी हो सकता है। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, ऐसी स्पीसीज को चूज करते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हो, जो एक दूसरे की ईल्ड को बढ़ाए। पर कभी कभी क्या होता है, एक स्पीसीज की ईल्ड बढ़ती है, एक ही घट जाती है। ओके, और कभी कभी क्या होता है, दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। तो ऐसा फॉरेस्ट में नहीं होता है, क्योंकि फॉरेस्ट का कंपटीशन एक अलग है। ओके, और यहाँ पे एक सिस्टम अलग है। हमारा यहाँ पे दो दो चीजें हम देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन बहुत जरूरी है हमारे लिए, ताकि दोनों कंपोनेंट है या तीनों कंपोनेंट एक दूसरे को हेल्प करें, यील्ड इंक्रीज करने में, फर्टिलिटी को एनहांस करने में, सस्टेनेबिलिटी को एनहांस करने में। दूसरा क्या, इकोनॉमिक इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। हमको दोनों कंपोनेंट से पैसे कमाने हैं। देखो, फार्मिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वी हैव टू अर्न सम मनी। ठीक है, और यही दोनों चीजें हैं कि इकोनॉमिक इंटरेक्शन और इकोलॉजिकल इंटरेक्शन इज डिफरेंट इन दी नेचुरल फॉरेस्ट एज कंपेयर टू और दिस एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम। क्योंकि एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम में हम हमें मेजर करना है, और नेचुरल फॉरेस्ट में वी डू नॉट मेजर दीज काइंड ऑफ इंटरेक्शन और रेवेन्यू जनरेशन हम नहीं देखते हैं, क्योंकि वो हमको मेंटेन करना है बस, जस्ट टू डाइवर्सिटी एंड मेंटेन दी नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। तो अकॉर्डिंग टू मी मेरे पास इसका यही आंसर है। Great. No, I think that was very informative. And I think we have time for one last question. Um, so we have another question asking, are there any particular plant species which are used in agroforestry? So I know you spoke about a few trees or like a few systems that you've been working with, but would you want to kind of share your experience and go into some detail regarding any specific plant species? Okay, I already told you that nowadays we need fast growing species. Okay, I am working on the Melia dubia. Okay, there are two trees, eucalyptus that is called Nilgiri and Melia dubia that is called Malabarni. Both are the fast growing species. But in case of eucalyptus, the problem is that it is water requiring. It is also known as biodrainage plant. इसका वाटर रिक्वायरमेंट बहुत है। बट इफ यू गो फॉर द मिलिया डूबे, इसका वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम है। आपके पास पानी नहीं भी है तब भी आप इसको ग्रो कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा, कोई भी अगर इस प्रोफेशन में आना चाहता है तो मीलिया डूबिया को ट्राई करें। ठीक है, दूसरा एक ट्री है महागोनी। महागोनी एक ऐसा ट्री है कि आपको करोड़पति बना सकता है आफ्टर 10 ईयर। इन 1 हेक्टर में अगर आप महागोनी लगाते हो और उसके साथ में कुछ क्रॉप भी ग्रो करते हो तो उसका टिम्बर जो है बहुत स्ट्रांग है और काफी अच्छा मार्केट वैल्यू है। इससे भी बहुत सारे ट्री है, लाइक सागवान इज देयर, टीक इज देयर। टीक बेस्ड एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम काफी पॉपुलर है, इधर महाराष्ट्र में है, साउथ में है, और हिली एरियाज में, उत्तराखंड में। बट टीक के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसका हार्वेस्टिंग पीरियड बहुत ज्यादा है। 30 to 40 ईयर्स के बाद आपको इसको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। बट उसका रेवेन्यू बहुत मिलेगा, आपको पैसा बहुत मिलेगा। बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप मीलिया डूबिया के साथ जाइए, बहुत अच्छा है। और महागोनी है, वो भी बहुत अच्छा है। पॉपुलर है, पॉपुलर भी बहुत अच्छा है। यूकेलिप्टस भी है। तो ये तीन चार स्पीसीज जो फास्ट ग्रोइंग है। और इनके साथ एक अच्छी बात ये भी है कि अगर आप नीलगिरी लगा रहे हो, एक बार आपने लगा दिया, 2 से 3 साल के बाद कट कर दिया, देन ऑटोमेटिकली दे विल ग्रो। उनका कॉपिसिंग एबिलिटी इतना ज्यादा है। ठीक, आपको रीप्लांट नहीं करना पड़ेगा, आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ज्यादा नहीं है। आपने एक बार लगा दिया तो हर बार कटिंग करोगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो कैजुरिना के केस में भी यही है, कॉपिसिंग होता है। ल्यूसेनिया लुकेसिफेला है ना, जिसको सू बबुल बोलते हैं, उसमें भी कॉपिसिंग होती है। पॉपुलर में भी कॉपिसिंग होती है। तो ऐसे ट्री मैं बता रहा हूँ आपको जिसमें आपका कम से कम खर्चे में काफी अच्छा प्रोडक्शन मिल जाएगा। और मैंने जो सिस्टम डेवलप किया मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि मिलिया डूबिया डूबिया के साथ लेमन ग्रास का एक सिस्टम डेवलप किया है। दूसरा ड्रैगन फ्रूट के साथ में मिलिया डूबिया का एक सिस्टम डेवलप किया है। और एक काउपी के साथ में सपोटा का सिस्टम डेवलप किया है। और ये बहुत बहुत सक्सेसफुल सिस्टम है और बहुत अच्छा रेवेन्यू हमको मिल रहा है। Got it. I think just going off this question, there's one question from Namita, and she's asking, um,
is agroforestry possible in the Rajasthan plant species? And can you give any specific suggestions for this kind of area? या आई आल्सो बिलोंग टू राजस्थान ओनली। तो देखो राजस्थान का क्लाइमेट बहुत एरिड काइंड का है, ठीक है। तो वहाँ पे भी वन सेंटर इज देयर काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन जोधपुर। सो दे हैव डेवलप्ड सो मेनी एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम। तो उन्होंने एक बेर बेर इज वेरी फेमस इन राजस्थान, ओके, बेर एंड आंवला। उसके साथ में वो काउपी है, और आपका जो ग्रीन ग्राम है, और आपका जो मोट बीन है ना। इसके साथ एक सिल्वी एग्री सिल्वी कल्चर सिस्टम डेवलप किया है, वो बहुत काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि आपको बेर में पानी की रिक्वायरमेंट कम है, आंवला में भी पानी की रिक्वायरमेंट कम है, और आपका ग्रीन ग्राम है और ब्लैक ग्राम है, इनकी भी वाटर रिक्वायरमेंट कम है, और इनकी ड्यूरेशन भी बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये लोकेशन स्पेसिफिक अच्छा मॉडल डेवलप किया है, तो एक हम ये कर सकते हैं। दूसरा है खेजड़ी है, जो प्रोसेस सीनियर एरिया, वो एक नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री भी है। तो आपको कोई भी प्लांटेशन नहीं मिलेगी राजस्थान के अंदर, मगर आपको ये खेजड़ी का पेड़ हर जगह मिलेगा, ठीक है। तो इसकी लीव्स पाउडर में काम आती है, और उसकी जो वुड है वो भी फ्यूल वुड में काम आती है। तो इसके साथ भी एक एग्रोफोरेस्ट्री का सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने खुद मेरे घर पे ड्रैगन फ्रूट का ड्रैगन फ्रूट एक कैक्टस काइंड ऑफ प्लांट है, कैक्टस फैमिली से बिलोंग करता है। वो कैक्टस को क्या ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ड्रैगन फ्रूट बेस्ड सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं राजस्थान के अंदर। तो बहुत सारे लोग अभी स्टार्ट किया है उन्होंने। तो कहने का मतलब है कि आप प्रोसोपिस सिनेरेरिया है, खेजड़ी है, बेर है, आंवला है, ओके, ड्रैगन फ्रूट है। तो इन सब का एक एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम बना सकते हैं। और बाकी इफ यू गो टू द गंगानगर काइंड ऑफ बेल्ट, वहाँ जो पंजाब साइड का जो बेल्ट है, वहाँ पे हॉर्टिकल्चर बेस्ड एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम डेवलप कर सकते हो। वहाँ पे जो किन्नू है, जो संतरा है, वो फेमस है, मौसम्बी है। तो हॉर्टिकल्चर बेस्ड सिस्टम वहाँ डेवलप कर सकते हो आप। Great. I hope this was what you were expecting and it was helpful, Namita. And I think we are almost at time, slightly over it, I think. But it was a pleasure talking with you, Dinesh sir. And I would like to thank you on behalf of all of our Sustaina Greens team for taking out time and joining our session today. Before we end, is there anything else that you would like to add or kind of say or share with our audience? No, I it's over for my side. Thank you so much. I would like to thank all the viewers as well for staying on for the entire session. And we'll be having many more upcoming sessions that we'll be posting on YouTube as well as our Instagram. So I would like to encourage all of you to subscribe to our channel and get notified for our upcoming events and sessions. But thank you again. And I hope all of you have a wonderful weekend and we chat again soon. Thank you. Thank you, sir. Okay, thank you, thank you, Chair. Thank you.